Okay, so the next problem will be here, implement 8 into 1 mux using 2 into 1 mux. Okay, so this is also under like implementation of implementation of higher order multiplication using lower order multiplexer. Okay, so द ट्रिक वाज लाइक सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ 2 into 1 मक्स चाहिए. ओके, सो द ट्रिक वाज नंबर ऑफ मक्स इज इक्वल टू, लाइक यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो लाइक आपको we have to divide this 8 by this 2. Okay, 8 by this 2. Okay, तो यहाँ से जो आपको आउटपुट मिलेगा that is 4, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, 4 will divided by this 2. Okay, now यहाँ पे जब 4 by 2 को आप जब इसका जो रिजल्ट मिलेगा that is 2, वो यहाँ पे लिख दीजिए and divide by this 2. Okay, तो ये आपका कितना हो जाएगा? So like 4 plus 2 plus 1. Okay, so we will require 7. Okay, we will require 7 2 into 1 multiplexer for the implementation of 8 into 1 mux. Okay, now तो देखिए कैसे implement करेंगे. ओके, सो सबसे पहले दिस 4 रिप्रेजेंट की आपके फर्स्ट स्टेज में कितने 2 into 1 मक्स चाहिए. ओके, तो आपको यूज करना पड़ेगा 8 2 into 1 मक्स. ओके, 8 2 into 1 मक्स. It will connect like this. So यहाँ पे देखिए this is also 2 into 1 mux, this is 2 into 1, this is also 2 into 1, this is 2 into 1. Okay, now this 2 represent कि आपके 2 सेकेंड स्टेज में कितने 2 into 1 mux चाहिए. तो this is 2 into 1 mux. Okay, and in last stage we require 1 2 into 1 mux. Okay, तो कितने हो गए? टोटल 7. Okay, टोटल 7 mux चाहिए आपको. Now here the inputs are like I0 I1, this is I2 I3, this is I4 I5, this is I6 I7. Okay, so actually this is 8 into 1 mux, मतलब कि आपके इनपुट कितने होंगे? 8, यानी कि that will be from I0 to I7. ये तो हो गया आपका इनपुट. Now the सेलेक्ट लाइन कैसे कनेक्ट होगा? देखिए जो आपका जो सेलेक्ट लाइन है वो जो फर्स्ट स्टेज इसका सेलेक्ट लाइन कॉमन रहेगा एंड दीज आर S0, और सबसे पहले लाइक अगर आपका इनपुट 8 है तो वी कैन से कि वी हैव 3 सेलेक्ट लाइन, दैट इज S0 S1, सेकेंड स्टेज में आपका S1 कनेक्ट होगा और लास्ट स्टेज में S2 कनेक्ट होगा लाइक दिस. ओके, फिर यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा और यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा दिस विल गो एज इनपुट टू दिस. सिमिलरली यहाँ से आउटपुट मिलेगा और यहाँ से आउटपुट मिलेगा, दे विल गो टू दिस मल्टीप्लेक्सर. सिमिलरली जो इसका जो आउटपुट है दिस विल कंसिडर एज अ इनपुट फॉर द लास्ट स्टेज ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा. ओके, तो ये हो गया आपका 8 into 1 मक्स. ओके, तो ऐसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपना 8 into 1 mux using 2 into 1 mux and we require 7 2 into 1 mux. ओके, नाउ द नेक्स्ट विल बी. ओके, तो हमें पता चल गया कि ट्रिक क्या है और वैसे ही हम लोग बता सकते हैं लाइक अगर मान लीजिए आपको इंप्लीमेंट करना है और 16 into 1 multiplexer using 2 into 1 mux. तो आपको कितने 2 into 1 mux चाहिए? देखिए this will be 8 plus 4 plus 2 plus 1, that is 15. Okay, 15 mux चाहिए आपको, 15 चाहिए. Similarly, if you go for like 64 into 1 multiplexer, this is 64 into 1 multiplexer using 2 into 1 mux. Okay, तो कितना चाहिए होगा आपको? देखिए this will be 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Okay,
and if we'll add this, we'll get 63. We'll get 63. Okay, so we require 63 2 into 1 mux for the implementation of 64 into 1 mux using 2 into 1 mux. Okay, now the next can be like 256 into 1 using this 2 into 1 mux. ये हो गया. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप देखिए. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे वी रिक्वायर 255 मार्क्स, 255 मार्क्स. और ये कैसे आएगा देखिए, दिस विल बी लाइक 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 लाइक दिस. ओके, ऐसे. तो आप ऐसे लाइक बता सकते हैं कि कितने 2 into 1 मार्क्स चाहिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर. ओके, नाउ सो लाइक यहाँ से आप जनरलाइज कर सकते हैं एंड दिस विल बी लाइक दिस देयर लाइक therefore for the implementation of two power n cross 1 mux, like this is the order, the number of 2 into 1, like 2 cross 1 mux is 2 raised to n minus 1. Okay, this is the generalized form. Okay, this is the generalized form. Okay, मतलब कि अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है दिस 2 raised to n cross 1 mux को यूजिंग दिस 2 into 1 mux. ओके, तो आपको कितने 2 into 1 mux चाहिए? This is 2 raised to n minus 1. Okay, now the next will be like write down the question is like this. Next is like 16 into 1 mux using 4 into 1. Okay, so we can simply use the trick और बता सकते हैं कि कितने मक्स चाहिए. ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या है आपके 16 बाई, सो नंबर ऑफ मक्स कितने चाहिए देखिए, नंबर ऑफ मक्स इज इक्वल टू 16 बाई 4 प्लस यहाँ से जो रिजल्ट आएगा दैट इज 4 बाय 4. ओके, एंड द रिजल्ट विल बी 1. तो इसके आगे प्रोसीड नहीं करेंगे. तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि कितने चाहिए 5. ओके, मतलब कि वी रिक्वायर 5 नंबर ऑफ 4 into 1 मार्क्स. ये और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे देखिए, we can implement like this. Okay, so like first stage में this represent first stage is 4 and this represent second stage. Okay, so like first stage में आपको 4 input connect करना पड़ेगा, like 4 into 1 mux connect करना पड़ेगा like this. Okay, this is 4 into 1, this is also 4 into 1, this is 4 into 1 and this is also 4 into 1. यहाँ से आपको आउटपुट जाएगा and it will go to this 4 into 1 mux, and here we'll get our output y. Okay, and the select line will be here, the select line in this first stage will be like S0. Sorry, actually we are using 4 into 1 mux, तो भी जो 4 into 1 mux रहेगा उसमें 2 सेलेक्ट लाइन रहेंगे. तो यहाँ पे आपके लाइक S1 S0 S1 S0 and S1 S0. This will be also S1 S0. Similarly यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी S0 and S1 like this. Okay, so these are the inputs from I0 to I15. These are the inputs. These are the select line. Okay, and here we'll get our output.
So like similarly, अगर आपको implement करना है using this four using this 4 into 1 mux. So again we can apply like again we can go for this short trick and like 64 we can go for like 64 into 1 using uh, just consider here if you implement 64 using this 4 into 1 तो कितना चाहिए होगा. like सबसे पहले तो आपको 16 plus 4 plus 1 तो कितना चाहिए आपको 21. Similarly, if you have to implement this to sorry this will be 1 6256 into 1 को implement करना है अगर 4 into 1 से ओके तो कितना चाहिए होगा. देखिए सबसे पहले तो आपको लाइक द प्रोसीजर इज लाइक डिवाइड बाय दिस 4 ओके तो कितना होगा. दिस विल बी 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 ओके तो यहाँ पे देखिए कितने हो जाए आपको 85 ओके. We require 85 4 into 1 mux. So like this is the trick, okay, and this is the implementation of like higher order multiplexer using lower order multiplexer. So this is our one of the topic. Now I'll go for like how this multiplexer behaves as a universal circuit, okay, universal logic circuit.